Yes. Hello, my dear students. Good evening. As you know that yesterday I was discussing the case M. Mohammed, and after that, at that day, I told you regarding the whether garblet betel nuts is food or not, and finally in that case it was observed that garblet betel nuts are also come under the category of food. Whatever was that, everyone knows about the earlier class. Today I have to start some new topic. New topic is that a definition of food. Everyone knows that before starting the classes, we always talks about the previous year question paper. Do you know why I always concentrate? Because students want to read only those questions, those topics which are relevant for the semester exam. Maximum students, this is the habit. Every habit, it is the habit of every students, including mine when I was a student. That's why I always focus that these questions had been asked in the previous year question paper. For example, define the food regarding the questions. Every year, this question has been asked 2015, 17, 18, 19. And you know that I have no question paper of 2016. So that's why I am not saying anything about the 2016. But regarding the others, I am sure that previous year question paper. For example, see the question. Define food. Define food. 2015. 2017, discuss in detail definition of food. Discuss in detail definition of food. This is the unknown year. In this case, this is also definition of the food, but this is based on the particular case, because this problem is based on the M. Muhammad case. This is betel nut. The weather question was that garblend betel nuts, raw betel nuts come under the definition of food or not. It means you have to define the food, and after that you will analyze M. Muhammad case. It means again definition of food. Again 2018, define the food, that is the definition of food. Again you have to ask. Again 2019, define food in the light of. My point is that if you are going to attempt any question from the topic Food Safety and Standard Act 2006, it means one question is mandatory, and that question is that define the food. This is the important topics which you have to discuss. Regarding the this point, come to the definition of the food. As you know that as you know that in the personal life I am a good person, but every time I teach the criminal law, that's why my language several times skips, sometimes knowingly and sometimes unknowingly, so that you can understand in a better manner. For example, study I also told you that J means you can remember. This is for example Jan. जैसे हम कहते हैं ना कि you are my Jan. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जान? जान इज द हिंदी वर्ड. जान का मतलब होता है कि आई कांट सर्वाइव विदाउट यू. जान मीन्स हम जान किसको कहते हैं? जिसके ऊपर हम क्लेम करते हैं कि आई कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट यू. अलग बात है कि हम लोग ये जान कई लोगों को बोल देते हैं, कई जगह एक्सेप्ट होता है, कई जगह रिजेक्ट होता है, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन हमें वर्ड यूज कर देते हैं. जान मीन्स वी कांट सर्वाइव विदाउट यू. As for example, food. No one can survive in this world without food. That's why food come under the category of Jan. That is, it come under the category of J, section 3J. I hope that in future you will never forget under which particular section food word has been defined. The word section 3J has talks about the food. Come to the part section 3J. What is the section 3J? For the better understanding, I have divided section 3J into three parts. How many parts? Three parts. First part talks about the main body, main parts. First part, this is the main part.
Second part talks about what come under the definition of food. It means second part talks about extension of main body. Extension of main body. Suppose that I am taking the name of the Zehra Gul. Suppose that I am saying that she is a girl, girl student in the LLB second year. This is the main body. I'm saying that she has a extraordinary command over the language as well as understanding. It means I am including something in her personality. It means what that she had extraordinary command over the language. This is something extra. This part is the including parts. Third part, that is the excluding parts. Excluding parts, simply this is the clarification. This is the something. It denotes that what comes and what does not come. Suppose that I am saying that she is never involved in extra calculate like this, whatever is that. It is the excluding part. It means three parts: main part, including part, excluding part. And as you know that every year question has been asked, I hope that you will remember 3 by words. You can do. तुम लोग कर सकते हो, क्योंकि एक तो बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग तो मैं यहाँ पे क्लियर कर ही दूंगा, लैंग्वेज का कमांड भी है, और एक बार डिसाइड कर लोगे कि यू हैव टू रिमेम्बर, यू कैन रिमेम्बर. मैं हमेशा एक बार एग्जांपल देता हूँ, अभी एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल जैसे देता हूँ तो ग्रुप छोड़कर भाग जाते हो, इसलिए बचता हूँ, लेकिन फिर भी दे देता हूँ. मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग का जुडिशरी में कई सालों तक नहीं हुआ. उसका रीजन बहुत सारे रीजन था, लेकिन उसमें एक था यूपी, बिहार, एमपी जैसे स्टेट में बेर के मतलब रीडिंग कर रिमेम्बरिंग वर्ड रिमेम्बर करना पड़ता है. दिल्ली और पंजाब, दिल्ली हरियाणा को छोड़ करके हर जगह बेरेट का वैल्यू होता है. तो जब मैंने बनारस, जब दिल्ली से छोड़ करके जब बनारस गया, तो मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, हमारा बैचमेट था, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था. तो हमने उससे कुछ ऐसे बात करने लगा, तो उसने हमें कहा कि मुरारी जी आप सेक्शन याद कर सकते हैं. हमने कहा नहीं यार, कॉन्स्टिट्यूशन का तो मान याद कर सकता हूँ, आईपीसी का याद कर सकता हूँ, बाकी कैसे याद कर सकता हूँ. अब तुम कहोगे टीपीए का याद कर सकते हैं. कहा कि नहीं आप याद कर सकते हैं, हमसे पूछिए. मैंने उससे पूछा भाई साहब टीपीए का सेक्शन, मैंने पूछा सेक्शन 41, 43, 52, 52A, गजब का कमांड था. उसने बाय वर्ड याद कर लिया था, उसका सेक्शन नहीं है. तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो बहुत डिफिकल्ट काम होता है. कहा कि नहीं, बस एक बार अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि हमें सेक्शन याद करना है, आप 2-4 बार प्रैक्टिस मारिए, अब याद कर लेंगे. उसके बाद से तो मैंने भी बहुत सारे सेक्शन याद किए. दैट इज द अदर पार्ट. तुम भी याद कर सकते हो, एक बार हमारे कहने की वजह से एक बार याद करके देखना, याद होता है कि नहीं होता है, डिसाइड करके देखना. अब इसको कैसे करते हैं, फूड का मेन बॉडी क्या है. तो मेन बॉडी में 3 पार्ट्स हैं. फूड मीन्स एनी सब्सटेंस. फूड मीन्स एनी सब्सटेंस. That substance whether processed or partially processed or unprocessed. It means that substance either processed or partially processed or unprocessed. And the most important thing is that which is intended for human consumptions. There are, you can say that 5 words are important. Word first substance, second processed, third partially, fourth unprocessed, and fifth is that human consumption. This is the part of the definition of the food. For example, if this is the smart art definition of food, where it has been defined. It has been defined in Jan 3J. It has been defined. What is the definition of this? It says that any substance. Okay. In this world, everything depends upon the substance. लोग कहते हैं ना, जल पावा गगन समीरा, 5 तत्व से बना समीरा. It means everything depends upon the तत्व. तत्व क्या है? That is the facts. पूरा एविडेंस किस पे डिपेंड करता है? फैक्ट पर ही डिपेंड करता है. तो हम लोग का जो भी है सब्सटेंस है, फैक्ट है, तो ये किसकी बात करता है? एक सब्सटेंस की बात करता है. अब हम किस तरह के सब्सटेंस की बात करते हैं? 3 तरह के सब्सटेंस की. या तो सब्सटेंस प्रोसेस्ड हो, या पार्शली प्रोसेस्ड हो, या अनप्रोसेस्ड हो. अब इसका मतलब क्या होता है प्रोसेस्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस्ड, पार्शली प्रोसेस्ड, अनप्रोसेस्ड?
For the example, yesterday I was giving one example. For the example, paddy, rice, and rice after cooking. So at what stage you eat? As you know that paddy you can't eat, right? Rice you can't eat, but rice after cooking, whatever method is that, you can eat. For example, I can say that unprocessed is the paddy. अनप्रोसेस्ड इज द पैडी. हमने गया धान खेत में गया, धान काट के लाया, उसको पीट दिया धान को, और उसके जो पूरा होता है, पता नहीं पुआल जिसको बोलते हो महाराष्ट्र हरियाणा में, उसको अलग कर दिया. So that part धान, that is paddy, is processed. But rice is partially processed. Rice is partially processed because rice you can't eat. It is not at that extent, but it is the not come under the category of unprocessed because we have removed something from the rice. वो एक वर्ड होता है ना, हे या सूखी घास जो भी कहते हो, मतलब तो तुमसे ज्यादा. जैसे धान को हम ले जाते हैं ना, मशीन में कुटवा देते हैं या मशीन में डाल देते हैं, तो उसका कुछ पार्ट राइस अलग हो जाता है और उसका भूसी उसी जो होता है वो अलग हो जाता है. तो ड्राई हे कह सकते हो, जो भी कहना कह सकते हो, राइस मिल जो भी हो. So this is the unprocessed. Paddy is unprocessed. Rice is the partially processed, and processed final stage. Final stage that after cooking, whatever bhat, chawal, rice is, this is the process. It covers not only the rice, it covers all these things, whether processed, partially processed, or unprocessed. In this way, what happened in the Muhammad case? In the Muhammad case, what was said by the court? I will take only 1 minute. In the Muhammad case, Honorable Supreme Court, Honorable Madras High Court held that ungar blade, beetle nut is the unprocessed. Ungarbled beetle nut is unprocessed. Ungarbled का meaning देख लेना. Ungarbled beetle nuts is unprocessed. And after the new definitions under this particular act, unprocessed also come under the category of food. As you know that ultimately it will be for the human consumption. Ultimately it will be for human consumption. That's why ungarbled beetle nuts is come under the definition of food. For another point, it was said that beetle nut is also food, but it come under the category of processed. See the difference between beetle nuts and ungarbled beetle nuts. I hope that you can understand in a better manner. These are the, you can say that definition of food covers, there are 3 parts of the definition of food, whether processed, partially processed, or unprocessed. And most important part of the definition is that human consumption. This is the most important. There must be intention for human consumption. Intention for human consumption. It means there are several things substance. For example, gold, diamond, coal, everything is substance. Sometimes they are processed, partially processed, unprocessed. Everything. अब डायमंड तुम्हारे हाथ में जो उंगली में पहन लेते हो, वो क्या है? Whether that is a food? No, that is not food. Although that is a substance, yes. Although that is a finely processed, yes. But why that ring of diamond is not food? Because that ring is not intended for the human consumption. That's why that will not come under the category of food. It means for the purpose of the food, most important is that there must be intention for human consumption. For the example, another example, fodder. For example, fodder. Everyone knows about the fodder scam. I am not going to talk about that points. For example, fodder. Wait 1 minute, wait.
Yes. For example, intended for human consumptions. That's why any fodder, whether fodder is substance, yes, fodder is substance. Sometimes it is processed, sometimes it is unprocessed, sometimes it is a partially processed. But that fodder will not come under the definition of food. Why? It must be intended for human consumption. Whether human can consume fodder, normally, no, it is not possible. But some persons may consume. I don't know how they can consume. That is the another points. The here point is that is the definition of the fodder. And this is the main body. This is the main body of the definitions. I hope that anyone ask what is the food, you can say any substance processed, partially processed or unprocessed intended for human consumption, that is called food. अब याद हो गया होगा तुम लोगों को. Okay, come to the second part. Second part talks about including. What it includes? It includes primary food. What it includes? Primary food. काम भाई. What it includes? Primary food. What is the meaning of primary food? Primary food what has been defined under JK. As you know that what was observed by the single bench of the Madras High Court in M. Mohammed case, it was observed in that particular case that ungarbled betel nuts is the primary food, and primary food come under the definition of food. It means all food are not primary food, but all primary food are food. That's why for the time being, I want to take 1 minute here and there. What was observed by the single bench? It was observed by the single bench that areca nut is an agricultural product include to fall within the definition of primary food. Where it falls? It falls in the definition of primary food. First of all, areca nut will come under the definition of primary food because it is a direct production from the trees. There is no any process further. That is called the primary food. And further line says that such primary food is covered under the definition of food. It come under the definition of food. That's why ungarbled betel nuts finally come under the definition of food. So writ petition was dismissed and he was unable to get any remedy. कहा गया कि अनगार्बलेड बीटल नट्स प्राइमरी फूड की कैटेगरी में आता है और जितने भी प्राइमरी फूड होते हैं वो फूड के डिफिनीशन में आता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड? फूड मीन्स एनी सब्सटेंस whether processed, unprocessed or partially processed intended for human consumption, including primary food as defined under ZP. ZP में ना as defined under ZK. As defined under ZK, that is the including genetically modified or engineered food. As you know that nowadays science is so much advanced. It said that even not only the primary food means direct production of the food from the agriculture's plant, whatever is there. Something, suppose that genetically modified or engineered food. Suppose that there is a food, but after taking the food, you have genetically changed its quality, quantity, whatever might be that. Genetically modified food. कई बार क्या होता है कि साइंस इतना डेवलप हो गया है कि वो टमाटर को कुछ भी बना सकता है, या जिस टमाटर को, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं 2 तरह का टमाटर मिलता है, एक देसी मिलता है और एक को मतलब विदेशी क्या कर ले हाइब्रिड टाइप में होता है. तो जो हम लोग देसी खाते हैं उसका एक अलग टेस्ट आता है, उसमें टेस्ट आता है, थोड़ा सा मार्केट में महंगा मिलता भी है. उसका रीजन ये भी होता है कि उसके प्रोडक्शन में
केमिकल कम यूज होता है और उसके प्रोडक्शन कम होता भी है, तो महंगा मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर कुछ टोमेटो मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिए गए हों या इंजीनियर्ड फूड कर दिए गए हों, तो उस तरह के सर्कमस्टांसेस में उसको भी कवर कर लेगा। आजकल हम कई बार कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट्स है या कुछ भी है, आप देखते हैं कि उसका 1 किलो होने वाला रहेगा, अब उसमें सुई हुई इंजेक्शन इंजेक्शन पता नहीं क्या क्या दे देते हो, पता नहीं कौन सा केमिकल मिला देते हो कि 5 किलो का हो जाता है वो। तो इस तरह का कोई भी अगर फूड हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड और इंजीनियर्ड फूड हो, तो इस तरह का आएगा। फूड के डिफिनेशन में आएगा, व्हाई डू यू नो व्हाट वुड बी बेनिफिट इफ डेफिनेशन ऑफ फूड विल बी वाइडर and what would be lost if definition would be narrower. This is the important questions. This is the very important question. Benefit of wider definition and narrower definition. For example, we are going to interpret food in a wider manner. It means we are authorizing FSI. We are authorizing the FSI so that it can regulate every types of food. अगर फूड का डेफिनेशन जितना वाइडर होगा, उसका सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि वो इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट किया जा सकता है। और जब इस एक्ट के अंतर्गत रेगुलेट होगा तो उसके एडल्ट्रेशन होने का या उसके सब स्टैंडर्ड क्वालिटी होने का या मिस ब्रांडिंग होने का चांस नहीं रहेगा। My point is that as you know that IPC is interpreted in a strict manner, but this particular act, especially definition, will be interpreted in a wider manner so that maximum things can be covered and regulated by the FSI. So that's why definition must be interpreted, especially definition of food must must be interpreted in wider manner. Suppose that we are making the definition in narrower manner. Minimum things will be covered under the Food Safety and Standard Act, and minimum things will be governed by the FSI. That's why what would be ultimate harm? Ultimate harm will be health of the public, and health of the public means it directly affects development of the nation. So that's why this law must be interpreted in a wider manner so that we can provide healthy life to the public. Like this. Are any ingredients of this food contains such ingredients of that? Another point is that infant food. infant food का मतलब क्या होता है भाई? जैसे बच्चों का भी कई कई तरह के फूड आते हैं, इन्फेंट फूड। जैसे मान लीजिए कि छोटे बच्चों का है, 1 महीने का पैकेट, 2 महीने का पैकेट, दूध का पैकेट, ये सब आते रहता है सब। तुम लोग तब तक इसका एक्सपीरियंस मत लेना ये सब पैकेट के दूध लाने का, जब तक कि नौकरी ना मिल जाए। बिना नौकरी की अगर शादी उदी कर लिए, चाहे पब्लिक नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, कम से कम स्टैंडर्ड में रहना, अदरवाइज कहीं इज्जत नहीं मिलेगी और हमेशा संकोच में रहेगा। और एक तरह से किसी बच्चे का तुम लोग जिंदगी बर्बाद कर दोगे। हर चीज के लिए बेचारे को तरसना पड़ेगा। पड़ोसी का बच्चा कपड़ा पहन रहा है, तुम्हारा फटा हुआ पहन रहा है, तो होता क्या है कि अपने की जब बात आती है ना तो हम लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन जब बच्चे की बात आती है तो कंप्रोमाइज करने में बड़ा थोड़ा सा बोरिंग लगता है। इसीलिए जब हमें बाहर और निकलना होता है, हम किसी तरह का कपड़ा वपड़ा पहन करके निकल जाते हैं, फटा पुराना जो भी, हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जैसे मुझे बच्चे को लेकर के जाना पड़ता है तो मैं उसको देखता हूँ हमेशा, जिस दिन बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहना करके लेकर जाते हैं तो उस दिन बहुत ही कॉन्फिडेंस में रहता है। ये सब चीजें हैं। बाकी लग रहा है बाजा वाजा बज रहा है, तुम सब भी बाजा वाजा बजवाओ, जल्दी इनवाइट करो, फूड खिलाओ। आवाज डिस्टर्ब हो रही है? हेलो और हो रहा है सर, आवाज साफ नहीं है क्लियर। क्या सर बहुत शोर आ रहा है। रुक जाते हैं सर कुछ मिनट। बस 1 मिनट रुक जाओ। दो मिनट सर, स्टार्ट करें? रुक जाते हैं।
हाँ सर, कर दीजिए सर। यस यस यस। कम हो गई आवाज। चलो ठीक है सर। ठीक 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 ठीक। अरे भाई तुम सभी बाजा वाजा बजवाओ इधर भाई। एलएलबी की डिग्री मिलने के बाद कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, या तभी पूछेगा जब 2-4 साल बाद जब नौकरी वोकरी लग जाएगी तब। अदरवाइज लॉ के स्टूडेंट की कंडीशन बड़ी खराब है। समझ में आया ना? तो सही टाइम देख करके बाजा बजवा लेना, तुम तो हमें बुला कर पुड़ुड़ी खिलाना। तो माय पॉइंट वाज सर दैट, बच्चों ने घोड़ी की तैयारी कर ली है सर, आप टेंशन मत लो। देख रहा हूँ देख रहा हूँ। Infant food, that is the important point. Packaged drinking water. Yesterday I told you about this particular act, that this was the alcoholic drink, chewing gum, any substance. You can read yourself. There is no need to discuss this. As you know that, for example, excluding, what does not come under the definition of excluding. As you know that any animal feed, as you know that it is a simply explanation, because even the main part was saying that there must be intention for human consumption. It means human consumption. Of course, it does not include animal feed, and I have already told you that any animal feed, although feed is the substance, although feed is the processed, unprocessed, or whatever might be that, but that is not intended for human consumption. Live animals, live animals, unless they are prepared or processed for placing on the market for human consumption. For example, hen. Hen will not, suppose that pet hen, paltu hen. Pet hen will not come under the definition of food. But as soon as you put that hen in the market for sale, that pet animal will come under the category of food. हमारे कहने का मतलब है कि जब तक जीव जानवर जंतु को पालतू के रूप में पाल रहे हो, वो फूड के डिफिनीशन में नहीं आएगा। लेकिन मार्केट में उसे ले जाकर के बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, कि यहाँ से कोई भी ले जाकर काट उड़ खा पी जाए, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि मान लीजिए जिसका जानवर बीमार हो गया है, उसे मालूम चल गया कि बीमार हो चुका है, अब उसी को ले जाकर मार्केट में काट देगा और तुम लोग जिसको खाना होगा जाकर खा लेगा, और सब के सब बीमार हो जाओगे, बीमारी चारों तरफ फैल जाएगी। तो तभी इसीलिए कर रहा है, इसको रेगुलेट करना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मार्केट में जो मीट उठ होते हैं ना, उसका हमेशा रेगुलेशन होते रहता है, उसकी हमेशा चेकिंग वुकिंग होती रहती है। The live animals does not come under the definition of food unless they are put in the market for human consumption. Plants prior to harvesting will not come under definition. Plants prior to harvesting will not come. Drugs, medicinal products, everyone knows that there is separate act. Cosmetic, everyone knows about the cosmetic. कॉस्मेटिक में कई बार देखते हो ना, प्रचार मर्दों वाली क्रीम, औरतों वाली क्रीम, कई बार वो दिखा देता है, पता ना जो सेंट उंट मारते हो तुम लोग, कि अगर ये वाला सेंट मारोगे तो औरतों की फीलिंग आएगी, ये वाला सेंट मारोगे तो मर्दों की फीलिंग आएगी। तो कॉस्मेटिक वाला जो भी हो दूसरे लाख से गवर्न होता है, इससे गवर्न नहीं होगा। जो भी फीलिंग आती रहे इस एक्ट के थ्रू गवर्न नहीं होगा। कॉस्मेटिक हो गया। नार्कोटिक और साइकोटिक सब्सटेंसेस, as you know that NDPS Act govern this particular act, that's why even this matter does not come with the category of this act. It means for the basic things you can clearly say that food means processed, partially unprocessed, intended for human consumption, and it also includes primary food, genetically modified or engineered food, food containing ingredients, infant food, packaged drinking water. Do you know there are two types of drinking water? One is the drinking water in the public, गांव में जाओगे वेल है, ट्यूबवेल है, everywhere that is the drinking water, or Delhi Jal Board water supplied by Delhi Jal Board will not come under this category. But you said that packaged drinking water for the Bisleri, Kinley, these will come under the definition of food. Alcoholic drink, chewing gum, any substance like this will come. चीविंग गम वाले से हम बड़े परेशान रहते हैं भाई, इतने दुष्ट होते हैं सब लड़का लड़की एग्जाम के टाइम में, खाते खाते रहेंगे, एग्जाम खत्म होने के बाद उसी बेंच के साइड में कहीं न कहीं चिपका देंगे सब। मतलब ये कुछ सेंस ही नहीं बनता है। तो थोड़ा सा तुम लोग समझते होगे चीविंग गम क्या होता है, पता ना कभी जो भी हो, तो खाने का एक तरीका भी होना चाहिए, कागज में लपेट के कहीं फेंक दिया करो।
ऐसा ना हो कि कोई और खाए और भुगतान कोई और करे। च्यूइंग गम शायद वही वाला जो मैं समझ रहा हूँ, ये च्यूइंग गम है। बाकी ये एनिमल फीड है, ए लाइव एनिमल्स, प्लांट्स, ड्रग्स, कॉस्मेटिक, माइक्रोटिव, ये सब याद कर लो। Come to the main points where I am going to discuss another point. Definition of the food I have already discussed. This word was defined in the old act, that is the Prevention of Food Adulteration Act under section 2(5), and in the new act, that is the J, that is the point. According to the new act, any substance processed, partially processed, unprocessed, and intended for human consumption. Come to the point regarding the another case. After the long discussions, I want to start a new case, which is very important. That is the Messrs Nestle India Limited versus Fasai and others. As you know that if you see your casemate, in the casemate and other word is missing. Do you know in the exam hall what would be effect and other? What is the benefit of and other? As you know that once I suppose that I am writing and other, it means there were several respondents. It means Fasai was not alone respondent, there were some other respondent. Suppose that I am cutting and other, what would be effect of this? Effect of this will be that there was only one respondent. It means in absence of and other, there was only one respondent. And in the presence of and other, there were several respondents. So here I have written that and other, it means in this particular case, Fasai was not alone respondent. Even the state of Maharashtra Commissioner, Chief Executive Officer, they were also the respondent. That's why this is the tendency to write and others. So what is the true name of this particular case? True name of this particular case, Food Safety and Standard Authority of India and other. पार्थ एक क्वेश्चन नोट डाउन करना तो अनदर और अदर में क्या अंतर है, बाद में थोड़ा सा मुझे ग्रामेटिकली बताना। अनदर और अदर दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे अनदर करेंगे, कहाँ पे अदर यूज करेंगे। कई बार देखता हूँ जैसे यहाँ पे यूज होता है ना, मेसर्स इंडिया लिमिटेड, अगर दो से ज्यादा होंगे तो यहाँ एंड अनदर यूज हो जाएगा, यहाँ पे जब यूज करते हैं तो अदर यूज हो जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस देखना होगा मुझे। तो यस, मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड वर्सेस दिस इज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस केस आई वांट टू डिस्कस हियर। कम टू द पॉइंट। पॉइंट इज दैट मेसर्स इंडिया लिमिटेड, I want to divide these four words into two parts. First part Messrs Nestle and second part India Limited. First of all, I will tell you about the Messrs Nestle, then I will discuss later on. Messrs Nestle is the company which main office is in the Switzerland. And as you know that, suppose I am using the word male, Mr, female, Miss, Mrs. In the same way for the company, this is what is the Messrs like this. The Messrs Nestle was the company which was established by Nestle. Who has established this company? Nestle नाम का एक आदमी था जिसका नाम था Nestle. Nestle. He established this company. Where he established? He established in Switzerland. When he established in 1866. 1866 की लड़ाई, 1866 की लड़ाई। इसका मतलब जब हम लोग भारत में 1865 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ रहे थे, जब प्लासी का युद्ध लड़ रहे थे तब वहां पे उस आसपास के टाइम में स्विट्जरलैंड में वह आदमी एक ऐसी कंपनी स्थापित करता है जो आज के डेट में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है। किस मामले में? फूड प्रोडक्शन के मामले में। दुनिया की नंबर 1 कंपनी अगर फूड प्रोडक्शन के मामले में है आज की डेट में, चाहे उसके मनी के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए, चाहे क्वांटिटी के हिसाब से कर लीजिए, चाहे जैसे भी आपको करना है कर लीजिए। फूड प्रोडक्शन के मामले में मेसर्स नेस्ले कंपनी इज द लार्जेस्ट कंपनी इन दिस वर्ल्ड। द मेसर्स नेस्ले कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1866 by whom? By the Mr. Nestle, where in the Switzerland. After that, after the globalizations and everything, he started to establish its branch in several countries.
So now what happened? Messrs Nestle company has a branch all over the world. For example, in India, name of the company is Messrs Nestle India Limited. For example, in the Pakistan, Messrs Nestle Pakistan Limited. For example, America, Australia, Britain, Canada, in the same way, Messrs Nestle USA Limited, Canada Limited, Australia Limited. It means my point is that main company is the Messrs Nestle, and its subsidiary company in India is the Messrs Nestle India Limited, which was registered under the Companies Act 1956, when it was registered in India, when it was opened in India. This is a big question. This company, Messrs Nestle company, established its branch in India when in 1985. When it was opened in 1985. अब 1985 का ये स्थिति है कि उसमें से तुम लोगों का कुछ कितने का जन्म ही नहीं हुआ होगा। मतलब ये समझ लो कि तुम्हारे जन्म से पहले की कंपनी भारत में खुल चुकी थी, लेकिन हमारे जन्म के टाइम ही खुली थी, क्योंकि हम तो कई साल बुजुर्ग आदमी हैं। अलग बात है कि माइंड से तो कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है, ओल्ड नहीं है, लेकिन फिजिकली तो भाई अब धीरे धीरे उम्र तो हो ही गई। 1985, this is the point is that it means case was decided. When case was decided in 2015. See, when case was decided in 2015, it means it was working since 30 years. It was working since 13 years. How 30 years? 15 years, 1985 to 2000, and 15 years from date of the at the date of the judgment. टोटल 30 इयर्स, 15 दुना के 30, तो 30 साल इस कंपनी को भारत में सेवा देते हुआ उस टाइम तक हम काउंट कर रहे हैं जब यह जजमेंट आया। मतलब अगर आज के डेट में काउंट करना चाहोगे तो 5 साल और जोड़ दोगे तो 15 दुना 30 और 5 35 साल हो जाएगा। अब एक कंपनी का ब्रीफ रहा, अब इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हुए बड़ा रिसर्च करना पड़ता है यार, क्लास लेना इतना इजी काम होता ही नहीं। क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना पढ़ दीजिए उतना ही लगता है कि अभी कुछ पढ़े ही नहीं हो, और पढ़कर और अच्छा कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। इसीलिए दिन भर पढ़ने के बावजूद भी फ्रस्ट्रेशन रहता है कि आज पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, डर लगता है हमेशा। Come to the here, this was the brief I have already written. Nestle Switzerland is a company registered and incorporated in the laws of the Switzerland. Which types of business carrying on? It carries on the business of the food productions. When it was established in 1866, when it is the largest food company, and petitioner's company. This is the petitioner company. Name of the petitioner company is the subsidiary company in India, which is the petitioner company. Messrs Nestle India Limited is the petitioner company, and this petitioner company is registered under the Companies Act. As you know that there is a new Company Act, but at that time there was old company law was prevailing, and it is carrying on business more than 30 years. भारत में लगभग 3 साल से ज्यादा की सर्विस दे चुका है। When judgment was being written by the honorable court. So this was the brief about the company. What happened with the company? As you know that in our company is very smart. It produces its products according to the taste of the region. Suppose that in the South India, public has something different flavor, different taste. North India something different, Haryana, Punjab something different, Africa something different. Its products comes according to the region. It has established 9 variants. It means it was producing 9 types of noodles. कितने तरह का? 9 तरह का नूडल्स इसका प्रोडक्शन भारत में चल रहा था। टेस्ट के हिसाब से जिसको जो टेस्ट लगे वो टेस्ट लगे। जैसे लड़कियों को क्या है कि थोड़ा सा मिर्च मसाला वाला ज्यादा पसंद आता है, उनको थोड़ा सा तीखा चटपटा मटपटा जो भी रहता है। और लड़कों को क्या है कि पेट भरने से मतलब है, चाहे तीता हो चाहे मीठा हो, मिल गया से मिल गया, बस इतना ही। दैट इज द पॉइंट इज दैट इस तरह का 9 वेरिएंट था। तो व्हाट हैपेंड इन द जनवरी मंथ ऑफ द जनवरी 2015।
There was a food inspector of the Barabanki, UP. Barabanki is the district of the Uttar Pradesh, and in that in that in that district there was a inspector, and what he saw, as you know that one day he took the packet of the Maggie. He took the packet of the Maggie, and he read on that packet what he read. He read no added MSG. पैकेट पे लिखा हुआ था नो एडेड MSG. What is the MSG? MSG is the monosodium glutamate, that is called the MSG. सही से नहीं लिख पाया हूँ, साइंस का नहीं हूँ, समझ जाना. तो monosodium glutamate, that is called the MSG. And what is the quality of this substance? Fact, it enhance flavor. What it do? It enhance flavor. It means it was alleged that according to him, our Maggi is best, and we do not add something so that you can become the habitual. इसका क्लेम था कि no added MSG. It means we are not adding anything extra so that you can become the habitual. एक्चुअली हो क्या रहा है आजकल मार्केट में, जैसे अफीम होता है, गांजा होता है. अफीम में क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी मिला दी जाए, मतलब अफीम लेने के बाद उसके बिना तुम रह ही नहीं सकते. मतलब एक हैबिट टाइप का बन जाती है कि नहीं, हाँ हमें लेना ही लेना है. तो आजकल क्या होता है कि फूड में भी कुछ ऐसे सब्सटेंस सब मिला दे रहे हैं कि एक अजब टाइप में फ्लेवर आ जा रहा है, और उसको आप खाने लगेंगे एक दो बार तो उसमें मतलब मजा आ जाता है. मजा क्या आता है जो भी हो. तो इस तरह का इसने क्लेम किया था कि नहीं हमारा ओरिजिनल है, आप ऐसे ही खाते खाते आप आदी हो जाते हैं, हम इसमें कुछ मिलाते नहीं है. तो क्या लिखा था कि नो एडेड MSG. दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट ही हैज रिटन, नो एडेड MSG. That food inspector took the sample of that Maggi and he sent to the state food laboratory Gorakhpur. As you know that Gorakhpur is a very famous place at present time, especially because the largest state of that is the Uttar Pradesh. Mani Honorable Chief Minister Mr. Yogi Adityanath belongs from the Gorakhpur, that is the working place. Basically, he belongs from the Uttarakhand, but working place of his, that is the Gorakhpur. So that matter was referred to the state food laboratory where that was situated, Gorakhpur. और जब गोरखपुर में जाएगा टेस्ट होकर के आएगा तो फिर उसको वहीं आना ही आना है. So what happened? It was claimed by that laboratory that here MSG had been added. It means just opposite to the claim. What was the claim by the company? No added MSG. And what was the report of the laboratory? Yes, MSG had been added. For example, this is the company. This is the laboratory. Company was no added MSG. No added MSG. Laboratory, yes, this is the added MSG, and you are misguiding the public. There was the first issue. Second point was that what happened regarding the lead. As you know that here I have written that Maggi noodles case. Everyone knows that. You can say this case Maggi noodles case, or you can say that lead and MSG case. Lead and MSG का मतलब तुम लोग नेगेटिव सेंस में मैं यूज किया हूँ. मैगी नूडल्स केस एक पॉजिटिव सेंस में है. लीड एंड MSG केस नेगेटिव सेंस है, बिकॉज इन दिस केस इशू वाज दैट एक्सीडिंग लीड एंड MSG केस. लीड का मतलब वही होता है ना कि शीशा हो या पत्थर हो आखिर दिल टूट जाता है. ये पता नहीं गाना इस तरह से है, दिल हो या शीशा हो टूट ही जाता है, जो भी हो. दैट इज द लीड एंड MSG पॉइंट इज दैट. दिस इज द पॉइंट. It was second issue was that I will take only 2 minutes, and the next class I will discuss. Regarding the, it was claimed that in the lead is permissible. Lead is a substance which is generally found in the food, that is the permissible. Lead and lead up to some extent is permissible. For example, it is permissible up to the 2.5 ppm. Up to that extent, it is a permissible. But what was found in that laboratory? In that laboratory, the Kolkata laboratory, it was found that 17 ppm lead was found in that quantity. In that
in that मैगी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा. I want to divide into 3 parts. Here's first part, permissible under the food. How much it is permissible under the food? 2.5. According to the Maggie, he was saying that in our Maggie, we use lead only 0.1. What happened in the laboratory? Laboratory was saying that Maggie was using lead up to the 17 ppm. See 3 points. Yes, it is a permissible, but Maggie was saying that our production is a best, and we use minimum lead. For example, we use only 0.1 ppm, but in the laboratory it was found that he was using the 70 ppm in this way. This was the matter on these two bases. First thing, on the basis of the exceeding lead, this is the exceeding lead, and on the basis of finding of the MSG, ban was imposed. And later on in the next class I will discuss the chronology from here, क्योंकि तुम्हें अब तुरंत तुम लोग कह दोगे सर क्रिकेट का टाइम हो गया है, कुछ भी बोल सकते हो. इससे अच्छा कि इज्जत बचाकर भाग निकले हम भी. बहुत अच्छा लगा. थैंक्स एवरीवन. ठीक ना? ओके. थैंक यू सर.